Yeah, Assalamu alaikum, everybody. वालेकुम So, सलाम। yeah, so I'd be continuing जो मेरी book मैंने last week या last time जब मैंने present किया था, discuss किया था, the name of the book, just to reiterate, the name of the book is Islamic Lifestyle or Mafatih Hayat by Ayatollah Jawadi Amli. तो जस्ट अ मिनट टू गिव एन इंट्रो अबाउट दैट कि उनका ये ख्याल था कि हमारे पास मफातिहुल जिनान तो है जो हमें आखिरत के बारे में दुआओं के बारे में जो बताती है जो अमाल हमें करना है। तो इस तरीके की बुक चाहिए थी हमें, लाइक मफातिहुल हयात जो इस जिंदगी में भी प्रैक्टिकली हमें बताए कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू लीड एन इस्लामिक लाइफस्टाइल। दैट वाज हिज इंटेंट एंड that's why the book is here. So this week, basically, I'll be going into like the first chapter. So as I had discussed last time, के इस book के different sectors हैं. So the first part is basically relationship with the self. Basically, that's the the topic. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि moral progressions. So moral progression, इंसान है, human being has to progress morally. So the first point here is about tafakkur and tadabbur, thinking. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि थिंकिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंकिंग। सो व्हेनेवर वी से कि तदब्बर करो, राइट, अबाउट योर एक्शंस एंड स्टफ लाइक दैट, इट बेसिकली मींस थिंकिंग अबाउट व्हाट आउटकम may what would be the outcome of our actions if we do something or if we don't do something. So that is what thinking means in this context. और यहाँ पे he is basically given us thinking about what outcome may come if we do, yeah, what outcome may come if we do something or if we don't do something. And यहाँ पे कुरान का एक reference दिए हैं, like two references have been given to highlight the importance of what tadabbur is, what thinking and tafakkur से क्या बेनिफिशियल क्या बेनिफिट्स हम हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूरह आले इमरान वर्स नंबर 190 191 का जिक्र किया है कि indeed in the creations of the heaven, bismillah ar-rahman rahim, indeed in the creations of the heaven and the earth and the alternation of the day and night there are signs for people of reason, ulul albab के लिए निशानी है, आयत है। And ye ulul albab, who are these people, right? They are those who remember Allah while standing, sitting, lying on their sides, and they reflect on the creations. Again, the word reflect. They reflect on the creations of the heavens and the earth, and they pray, "Oh Lord, you have not created all of this without purpose. So glory be to you and protect us from the torment of fire." And the author basically tells that there is always something new to discover. Like for example, if you think about the creation of the world for a year, it doesn't mean that we have reached the zenith of it. There's always something new which we can always reflect, think and discover. So आगे चल के ये कुरान का सहारा लिया था इन्होंने। अभी हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट का जिक्र कर रहे हैं कि होली प्रॉफिट सेड टू इब्न मसूद। ये होली प्रॉफिट की एक अच्छी एडवाइस थी कि इफ यू वांट टू डू समथिंग, द होली प्रॉफिट सेज, पैराफ्रेजिंग बिकॉज़ इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, सो इफ यू वांट टू डू समथिंग इट मस्ट बी डन विद इल्म एंड अक्ल, knowledge and rationality. You must be very careful not to do anything without thinking and knowledge. So tadabbur about actions generally means to think about the outcome and the consequence of the action. So that is very important. Whenever we are doing something, we need to reflect about what is going to be the end result. So that will help us to thread our path better, basically. Yeah. So यहाँ पे benefit, what is the importance of contemplation के बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि a light 2 रकात सलाह, light 2 रकात, उनका मतलब ये है कि उनकी मुराद ये है इस बात से कि with less मुस्तहबात of a person who's contemplative, जो बंदा तदब्बुर करता है, thinks about the realities, is better than क़याम al-लैल of a person without तदब्बुर। जो बंदा सारी रात नमाज तहज्जुद और क़याम करता है, उससे जो बंदा 2 रकात सलाह पढ़ता है, that is better। जैसे आई थिंक इमाम अली की भी एक सेइंग है नहजुल बलागा में कि द स्लीप ऑफ अ पर्सन, जो जो खवारिज है उनकी जो इबादत से जो मोमिन का सोना बेहतर है बोल के इमाम बोल के हैं कि नहजुल बलागा। तो यहाँ पे शेख शमाली जो ये लेक्चर्स को डायरेक्ट कर रहे थे, ये बुक एक्सप्लेन कर रहे थे, वो बोल रहे हैं कि अगर 2 रकात सलाह of a person who's contemplative is better than Qiyam al-Layl, then imagine अगर एक बंदा Qiyam al-Layl contemplation के साथ करे तो how much progress he can make in one night. So it's not always negative कि हम 2 रकात सलाह कर लें और Qiyam al-Layl ना पढ़े, it's more of like
2 रकात नमाज आप कंटेम्पलेशन के साथ पढ़ेंगे, अगर उसमें इतना बेनिफिट है, तो अगर इंशाल्लाह अगर हम क़यामुल लैल अगर करें, तो उसमें कितना बेनिफिट होगा। इंशाल्लाह अल्लाह तौफ़ीक दे कि हम क़यामुल लैल करें कंटेम्पलेशन के साथ। और गोइंग फॉरवर्ड और एक और हदीस होली प्रॉफिट की, सिफ़ातुल आखिल, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वाइज़ पर्सन बोल रहे हैं, राइट? उसके बारे में बता रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वाइज़ पर्सन इज़ व्हेन ही वांट्स टू स्पीक, ही थिंक्स केयरफुली अबाउट इट। बात करने से पहले बिफोर स्पीकिंग ही थिंक्स केयरफुली अबाउट इट। और बंदा सोचता है कि बात करने से पहले ही थिंक्स वेरी केयरफुली, एंड इफ ही कम्स टू अ कंक्लूजन दैट ही शुड स्पीक, राइट? ही स्पीक्स एंड ही बेनिफिट्स फ्रॉम इट। अगर उसने डिसाइड किया, उसने एनालाइज़ किया कि ये बात मेरे करने से मुझको कोई नुकसान नहीं होगा, तो ही स्पीक्स एंड ही बेनिफिट्स फ्रॉम इट। बट इफ ही कम्स टू अ कंक्लूजन दैट नॉट स्पीकिंग इज़ बेटर, ही स्टेज साइलेंट एंड रिमेन सेफ। तो यहाँ पे शेख शमाली बोल रहे हैं कि इट इज़ स्टेइंग साइलेंट मे नॉट ऑलवेज बी बेनिफिशियल, but it is always better to stay silent rather than talking and telling something destructive. That's the point. और गोइंग फॉरवर्ड एक और हदीस है जो छठवें इमाम बता रहे हैं कि देयर वाज अ पर्सन, समवन केम टू द होली प्रॉफिट एंड आस्क्ड फॉर एन एडवाइस। एक बंदा आया होली प्रॉफिट के पास एंड ही आस्क्ड फॉर एन एडवाइस। सो द होली प्रॉफिट बोल रहे थे, पूछ रहे थे उससे कि आर यू गोइंग टू टेक माय एडवाइस इफ आई गिव यू एन एडवाइस, आर यू गोइंग टू प्रैक्टिस, इफ आई टेल यू समथिंग विल यू प्रैक्टिस। Banda, though the person replied yes, the Holy Prophet asks him again and then asks him again. So 3 times, the Holy Prophet basically wants to make sure okay, whether the person will, is really serious about it. So यहाँ पे Sheikh Shamali also quotes that it's not about the advice, it is about also following the advice. वरना अगर Holy Prophet के पास भी advice पूछ के अगर हम follow नहीं करेंगे, it's not going to have any benefit on us, right? So basically, whenever we come across a good advice, we need to follow it. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि the holy prophet says that whenever you want to do something, then think about its end. So if you see the whole trend of this tafakkur and this the whole chapter is basically whenever we do something, we need to think about its ends. So whenever you do something, holy prophet says, sallallahu alaihi wasallam, whenever you do something, think about its end. Think end means future, not just the first few days or first few stages or first few years or something. Think about its end. If it is rush matlab if it lets you, if it's good, beneficial, if you can grow, rush matlab growth. If it is rush, then carry on and go ahead and do it. But if it is a bad thing, if it is not beneficial, if it can lead to misguidance, then keep away from it. So mostly whenever we get some people get very excited, कोई भी एक चीज है कुछ भी कर दें, नया करें, और starting के पहले 1 या 2 दिन कर देंगे, then there will not be any sort of what do you say, any sort of a continuation to it. So the Holy Prophet says that think, analyze before you do something, think about its end, think if it's beneficial. If it is, go for it. If not, stay away. And then going forward, last topic which is chapter में वो discuss कर रहे थे शेख शोमाली about Ayatollah Jawadi Amali's book. He says that takalluf के बारे में बोल रहे थे. So a moment should not undertake something. Moment should not undertake something which he cannot deliver or which will exhaust his or her resources. मतलब before you take up something, analyze and think whether you will deliver it or not. Don't try to overburden yourself. No, don't try to take up something which will exhaust you. So that's the point. और आखिर में दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों के साथ महशूर करे जो अल्लाह के अकॉर्डिंग आखिल हैं, वाइज हैं, इंशाल्लाह बोल के ये दुआ के साथ वो एंड कर रहे हैं. So it's a very nice book. So inshallah going forward, it will benefit me as well, and it will benefit inshallah the audience and everybody. Inshallah.